करते हैं. So last time we started with basic introduction to biodiversity, and then what we did was that we were doing various techniques due to which we can actually do the sampling of an area, any ecosystem, any grassland, any area, where we want to have an idea about the number and the variety of different species living in a certain place, within an enclosed area. And when we were doing the sampling, if I go back to the this slide, sorry, ये वाली slide जो है, सबको ये मेरी स्क्रीन तो साफ नजर आ रही है ना गाइस? Yes, miss. Yes, miss. अच्छा, हाँ. So this is the basic outline of the different sample methods. ये recap करना जरूरी है ताकि आपको कुछ याद आ जाए. In which what I did with you was that we had chosen a fairly uniform area for sampling, which was a crop field or a grassland. ठीक है? And then I also did one formula with you in which we were trying to sample those animals which frequently change their location from one place to another. ठीक है? तो अगर हम ये ले लें सबसे पहले कि हमने जो पिछली दफा किया था, last time what we did was sampling of a uniform area which includes the use of quadrats. मेरी स्क्रीन पे quadrats नजर आ रहा होगा, QUADRATS, quadrats. We were using quadrats and we were sampling. और फिर मैंने आपको स्पीशी फ्रीक्वेंसी, स्पीशी डेंसिटी का फॉर्मूला दिया था और हमने एक दो क्वेश्चंस किए थे. ठीक है? लेकिन जो बात मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि ये मैंने दो डिविजन्स के बारे में बताया था. इसको दोबारा से रिकैप कर लेते हैं कि if we have been given an area to sample, either that area can be a uniform area or a non-uniform area. If the area is uniform, the method of sampling that we use is quadrats. And if the area is non-uniform, जैसे कि उस दिन मैंने example दी थी उसकी rocky seashore की, तो in that case, the method used for sampling will be the use of transects. जैसे कि मैं अब इसको highlight कर रही हूँ. अगर हम कोई uniform area sample कर रहे हैं, so we will be using quadrats to sample it. If we are sampling a non-uniform area, then we will be using transects to sample it. अच्छा, quadrat और transect तो वो tool है जो हम use करते हैं to sample. Quadrat, if you remember, it's a square-shaped metal or plastic, sort of a device which we throw on different random places by generating random numbers, and we count the number of the species, and हम ये भी देखते हैं कि एक specific quadrat में कितने organisms हैं, या हम ये भी देखते हैं कि उस quadrat में वो organism है या नहीं है. So this method of sampling in which we use quadrats is known as random sampling. ठीक है? Random sampling. And the method in which we have to sample non-uniform areas, जिसमें हम transect use करते हैं, उस किस्म की sampling को कहते हैं systematic sampling. So last time we only did random sampling. We did not do systematic sampling क्योंकि जो मैंने आपको example दी थी वो एक crop field की दी थी. इतनी बात सबके समझ आ रही है? Yes, miss. अच्छा, फिर वो जो फॉर्मूला थे जो हमने किए थे, स्पीशी डेंसिटी, स्पीशी फ्रीक्वेंसी, हमने ये सारी कुछ कैलकुलेशन की, लेकिन मैंने आपके साथ ये नहीं किया था. आई ओनली डिड रैंडम सैम्पलिंग विद यू, आई डिड नॉट डू सिस्टमैटिक सैम्पलिंग विद यू. ठीक है? एक और चीज जो मैंने की थी, मैं पीछे जाती हूँ, कि आई डिड लिंकन्स इंडेक्स विद यू, जिसमें एक पास पेपर का क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसमें एक फॉर्मूला भी दिया हुआ था. आई टोल्ड यू दैट यू गाइज हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला. The technique is of capturing the animals, marking them, and then again recapturing them. इस पूरी technique को कहते हैं capture, mark, recapture technique. And the formula that we use to find out the number of animals within a particular area that are frequently changing position, उस formula का नाम है Lincoln's index. Having said that, आज जो हम करेंगे वो हम ये करेंगे transects
और उसके अलावा कुछ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला भी मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो पहले हम ट्रांजैक्ट कर लेते हैं। गोइंग बैक टू व्हाट आर ट्रांजैक्ट? Transects are ways to sample a non-uniform area. और जब भी हम किसी non-uniform area की sampling करते हैं तो उस type of sampling को कहते हैं systematic sampling. Systematic sampling done in order to sample a non-uniform area like a rocky seashore. और इसमें जो हम चीज यूज करते हैं वो है ट्रांजैक्ट. So let's do this today. ये भी बहुत ही आसान सा है, इसमें ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है. This is what we did last time. ये सब हमने किया था, if you remember. अच्छा, अब मरियम शराजी आप मुझे बताओ, ये जो आपको नजर आ रहा है ये डायग्राम, ये रैंडम सैम्पलिंग है या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है? Random. रैंडम है. Why did you say it's random sampling? Quadrats and it's uniform. To quadrats and it's uniform. Very good. The red shaped structure that you see is the quadrat. This white structure which you see is a tape measure which has been stretched across a large piece of land. And deciding which place are you going to throw the quadrats will depend upon you generating random numbers through a random number generator app, which will give you points. जैसे for example numbers वो आपको देंगे pair of numbers. Let's say कि यहाँ का pair of number है 1 on the x-axis and 2 on the y-axis. ठीक है? So the coordinates of these two numbers will give you the place where you will be throwing quadrats. ठीक है? अब आते हैं, and then we all did this. अच्छा, इसमें हम एक चीज हमने छोड़ दी थी रैंडम सैम्पलिंग में, which is percentage cover of species. ठीक है? I'll do this with you first. Whenever you are doing random sampling and you want to count the number of grasses, it's very difficult to count individual grasses. So in that case, what you will do is that you will, instead of counting the individual grasses, you will try to see how much percentage of the quadrat is this grass covering. For that, the ideal thing should be that we should be using a gridded quadrat. जैसे हम ये मैथ्स में करते हैं ना, ओ लेवल मैथ्स में भी करते थे कि अगर आपको एक ग्रिड दी हुई है, राइट, लाइक दिस, ओके, एंड इफ आई से कि दिस इज अ लीफ, सो हाउ मच इज द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ, सो व्हाट डू यू डू? कैसे करते थे आप ओ लेवल मैथ्स में? दुआ आप बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि लीफ का सरफेस एरिया निकालो. एक बॉक्स का एरिया निकाल के मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट द लीफ इज कवरिंग. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. और फिर हम कैसे करते थे कि हम देखते थे कि इफ द लीफ इज कवरिंग द एंटायर स्मॉल बॉक्स और 50 मोर देन 50% ऑफ द बॉक्स. इसी तरह से हम करते थे ना रिगार्ड, राइट? तो अब इसमें इफ यू हैव बीन गिवन द टास्क टू काउंट द नंबर ऑफ ग्रासेस, इन दैट केस आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, what method will you use? So you will say we will be using a gridded quadrat, and instead of individually counting the number of grasses, we'll be doing the percentage cover. जैसे कि ये कर रहे हैं यहाँ पे इस पिक्चर में percentage cover. You can see that this boy and girl are trying to find out the percentage cover. In fact, estimation का word use किया है कि ज़ाहिर है ये एक estimation है, it's not an accurate calculation. So estimating the percentage cover, it totally जो है ये 1 square meter का quadrat है, and it is divided into 100 small squares to make it easier to make the estimation for each species. Example देने के लिए ये example दी हुई है. For example, यहाँ पे let's say if I ask you to find out the percentage cover of the grass which belongs to species A and the percentage cover of the grass which belongs to species B. तो आपको नजर आ रहा है कि जो ईच स्क्वायर है ना वो 4% ऑफ द क्वाड्रेट एरिया है, हर छोटा स्क्वायर. सिंस स्पीशी ए इज ऑक्यूपाइंग 5 स्क्वायर्स, तो इसका मतलब 20% ऑफ द ग्राउंड इसने कवर किया है. ये सिंपल कैलकुलेशन सबको समझ आ गई है? बिल्कुल सिंपल है ये, मुझे बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कैलकुलेशन में? ठीक है, इसमें हाँ कुछ भी इसमें मसला नहीं होगा, ये आप आराम से कर लेंगे. एंड बिसाइड्स दैट एक स्केल होता है, यू आर नॉट सपोज टू रिमेम्बर, ये आपको पूरी स्केल की ये है ना कैलकुलेशन के वेरी फ्यू प्लांट्स होगा तो इसका मतलब है कि कवर इज लेस देन 1%. यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दिस, बट
when you are writing down an answer in paper 4, P4 की मैं बात कर रही हूँ, और एक बड़ा सा question आ जाता है, for example essay question, and essay question में they ask you to outline the steps that you use to do the random sampling of a fairly uniform area, and you have to jot down all the possible methods that you will be using. So just to name a method, you can say that yes, we can also use the Braun-Blanquet cover scale, which is an estimated scale for recording the different kinds of vegetations, especially grasses within quadrats. और उसमें हम जो है ये अपना हमने scale devise कर लिया है कि अगर मैं समझती हूँ there are many plants, so I will give it a value of 1. आप मुझे बताओ दुआ कि would you consider this the usage of this scale an accurate method of estimating percentage cover or not? No, I won't No. consider it. Okay, why wouldn't you your answer is correct. What why wouldn't you consider that this as an accurate method? Yes, क्योंकि एक तो approximately वो count नहीं किए होते boxes, so error हो सकता है इस वजह से. And another thing is very obvious that this is a subjective analysis, isn't it? Many का क्या मतलब होता है? What is many for you might not be many for me, right? Very many and any number of plants and cover is greater than 75%. So this is all subjective analysis, and subjective analysis always differs or varies from person to person, right? So yes, you will only remember the name of the scale, ठीक है? लेकिन आपको ये scale की values learn करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, ये एक चीज रह गई थी in random sampling, so I needed to cover this. And with that, I'll move on to systematic sampling, which is done to sample an area which is non-uniform. These are the things which we did last time. We solved this question. I'm just scrolling my pages. ठीक है? ये हम सब कर चुके थे. And now we are moving on to transects. अच्छा, transect की एक basic definition सबको पता होनी चाहिए कि just as we were using quadrats to randomly sample a fairly uniform area, we'll be using transect. So transect है क्या? It's a line, एक line है जो हमने एक रस्सी से बनाई है या टेप से बनाई है, ठीक है? For example, I have a long string in my hand or a tape, और मैं उस string या tape को जो मैं area नॉन रैंडम एरिया जो है नॉन यूनिफॉर्म एरिया में जो सैंपल करना चाह रही हूँ, आई एम स्ट्रेचिंग दैट स्ट्रिंग अक्रॉस दैट एरिया. और स्ट्रेच करने के बाद व्हाट एम आई डूइंग, आई एम यूजिंग ट्रांजेक्ट्स, and they are particularly useful for sampling areas where there is a transition of species from one habitat to another. जैसे कि last time मैंने राफे से पूछा था, राफे are you there over here? Yes, miss. हाँ, तो राफे आपने मुझे बताया था कि a seashore is a non-uniform habitat. Why is it that so? Miss, because there are different types of like environments there. Like there's the sand, the beach, the ocean, the rocks, trees, everything. The different types of environments. ठीक है, इसलिए कि उसमें ट्रांजिशन हो रही है, ये वाली चीज हो रही है कि there is a transition of species from one habitat to another. ठीक है, कि एक habitat है खुश्की यानी कि dry area है, and the other habitat is a wet area, which is the beach, the sea itself, the ocean itself. Then there are rocks also. So in that case, there is a you will find some species which are terrestrial. You will find some species which are purely aquatic or marine or whatever, or fresh water, right? So for that, you use this method, which is the transect. जब आप तस्वीर देखोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, instead कि मैं सिर्फ बातें करूं. Now on my screen you can see that a piece of string has been stretched across this non-uniform area. Let's suppose कि ये जो मैंने string stretch की है ये एक rocky seashore पे की है, ठीक है? A transect can be of two types. The one which you can see at the top of this diagram, which is known as the line transect, in which a rope has been stretched across this habitat, and that at every equal distance, जो आपने खुद अपने उससे डिसीजन से बनाई है, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डिसाइड करूं कि आफ्टर एवरी 1 मीटर, इसको 1 मीटर ले लेते हैं, 1 फिर 2 and then 3 4 5 6 7 8 इस तरह
1 meter के distance पे, but that distance should be equal. I will note down whether a plant or an animal जो भी मुझे नजर आ रहा है, it touches the string or not. ठीक है, वो टच करी है नहीं करी है स्ट्रिंग, अगर वो टच करी है तो देन आई नोट डाउन के दिस प्लांट इज प्रेजेंट इन दैट एरिया, व्हाटएवर. अगर टच नहीं भी करी है तो आई कैन नोट डाउन द नेम कि ये एक स्मॉल सी ग्रास है या जो भी है. This is one method of systematically sampling an area which is non-uniform and it is known as a line transect. जो सेकंड वाला मेथड है ना, जो सेकंड डायग्राम आपको इसके नीचे नजर आ रहा है वो ये वाला है. आई एम सर्कलिंग इट इन ब्लू. इट इज नोन एज अ बेल्ट ट्रांजेक्ट. राफिया मुझे आप बता सकते हो, but just by looking at the picture, what is the difference between sampling in the picture at the top and the picture below? Yes, Rafi. Miss, the picture at the top has like distinct gaps between each like sample, while the system below is like a realistic way of like everything's mixed up. Nothing, different types of species aren't divided. नहीं, एक और चीज भी बहुत साफ नजर आ रही है जो ऊपर नहीं नजर आ रही. ऊपर वाली पिक्चर में वी आर यूजिंग जस्ट अ पीस ऑफ अ रोप या स्ट्रिंग, ठीक है, जिसको हमने इक्वल डिस्टेंस पे मार्क किया हुआ है. सेकंड वाली पिक्चर में वी आर यूजिंग आल्सो द रोप. The only difference is that we have, instead of putting our marks at every 1 meter, maybe we've used a distance of 2 meters. लेकिन उसके अलावा भी हमें एक और चीज नजर आ रही है नीचे वाले डायग्राम. What's that? Quadrats. हाँ, quadrat नजर आ रहे हैं. So the second method is known as the interrupted belt transect. What is done in that method? You have the same piece of string or the rope or the tape, whatever. You have marked it at regular intervals. What intervals you choose is entirely your decision. But wherever आपने वो mark लगाया हुआ है ना, जैसे कि मैं इसमें लगाती हूँ, यहाँ पे एक mark लगा हुआ है या यहाँ पे mark लगा हुआ है, यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ पे भी mark लगा हुआ है, you are placing a quadrat. So what are you doing at every place where you have marked the rope? You are placing a quadrat and then you are doing the sampling in that quadrat. So systematic sampling can be of two types: line transect or interrupted belt transect. अब जब पूछा जाएगा आप हमेशा यही बताओगे. And then what is a line transect and what is a belt transect, उसको आप describe करोगे. Today I'll be doing some practice questions with you as far as line transect and belt transect are concerned. So let's begin. ये आपको एक उन्होंने रॉकी सी शोर दिखाया है और एक पिक्चर दिखाई है जिसमें they are using a line transect and they are using an interrupted belt transect. ठीक है? Anything which is not understood as far as this is concerned, just ask me. Otherwise, I'll move on and we'll do some practice questions. अच्छा, these are simple differences between line transect and belt transect. उन्होंने कहा है कि line transect हम उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास टाइम नहीं होगा, right? हमने जल्दी से फटाफट we stretch the string and we quickly see whether any organism is touching the string and we note down the name of the organism. Whereas a belt transect will be done when you have more time also and when you need a better data as compared to that which you got from the line transect. A belt transect will give you more data because you're using quadrats also, and it will give you data on the abundance of the individual species क्योंकि आप every distance पे you are placing a quadrat and you're noting down the numbers at different points along the line as well as on their range. For example, अब आपको देखो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि एक मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ. अच्छा चलो उस डायग्राम से पहले लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. राफी आप मुझे बताओ जो ऊपर जो एक हैबिटेट दिखाया हुआ है, डज इट लुक दिस वन लाइक अ यूनिफॉर्म हैबिटेट और अ नॉन यूनिफॉर्म हैबिटेट? It's non-uniform. Non-uniform है. So will we be doing systematic sampling or random sampling? Miss, systematic. Systematic sampling, and we'll be using in systematic we can use line transect or interrupted belt transect. ठीक है? अच्छा, because ये कि कहीं आपको पानी नजर आ रहा है, कहीं sand dunes नजर आ रहे हैं और हर चीज. Now, if you're using an interrupted belt transect in which you stretch a string across
the area which is non-uniform, and at every equal distance, if you are placing a quadrat, तो उस क्वाड्रेट के अंदर आप नोट करोगे कि हर इंडिविजुअल स्पीशीज के आपको कितने नंबर नजर आए. फॉर एग्जाम्पल कि दिस वाज माय एरिया, ठीक है, ये मेरा पूरा एरिया था जो मुझे सैंपल करना था फ्रॉम हियर टिल हियर. दिस इज 0 meters, ठीक है, एंड दिस इज अराउंड 60 meters जो आपको नजर आ रहा है स्लाइड पे. सही है. अच्छा, जनरली मैंने देखा कि द एरिया दैट आई वाज डूइंग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ऑफ had principally 3 different species of plants: sand crouch grass, marram grass, and sand fescue. So what I did was that between 0 to 5 meters, I noted कि जब मैंने यहाँ पे quadrat डाला तो I saw 3 species of this grass. फिर इस distance पे I saw 8 number of species of this particular grass were 8 and so on. मैंने जहां जहां जो देखा मैंने वहां पे डेटा डाल दिया. and I am now, what am I doing, that whatever calculations I did by systematic sampling, I am putting it on a table. अब मुझे एक बात बताओ, दुआ आप बताओ कि कैन आई प्लॉट दिस इंफॉर्मेशन, ये जो रिजल्ट मैंने बनाया है, क्या मैं इसको प्लॉट कर सकती हूँ एक बार चार्ट पे? मिस बार चार्ट तो नहीं बनेगा, एक हिस्टोग्राम बन सकता है. बार चार्ट नहीं बन सकता? नहीं, बिकॉज कंटिन्यूस डेटा है ना. नहीं, बार चार्ट क्यों नहीं बन सकता? ये 3 अलग अलग स्पीशीज है ना. अच्छा अच्छा, हाँ वैसे बन सकता है. हाँ बिल्कुल बन सकता है. देखो इसी the reason why I'm asking you this question is कि आपको एग्जाम में ऐसा डेटा दिया हुआ होगा, ठीक है, and they will tell you कि okay, this was the data that we obtained from systematic sampling. Now you present this data as a bar chart. तो ये ऐसे आएगा ना, ऐसे नहीं कर सकते क्या हम? कर सकते हैं. ठीक है. तो आई डोंट थिंक कि अब अगर इस तरह के कोई सिंपल क्वेश्चन आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. आपको दे कैन गिव यू अ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन इन विच दे से कि वी वर डूइंग सैम्पलिंग ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म एरिया. फॉर दैट वी यूज इंटरप्टेड बेल ट्रांजेक्ट्स. In that particular area, generally we saw that there were 3 different species of these plants, and we individually calculated the numbers of these species within each quadrat that we were throwing at equal distance away from the watermark, the high watermark. और ये था हमारा data. So now you're supposed to present this data on a bar chart. तो आपको सबको you should be capable of knowing कि आपको क्या प्लॉट करना है x एक्सिस पे और क्या प्लॉट करना है y एक्सिस पे. तो x एक्सिस पे तो है वो आपने डिस्टेंस प्लॉट कर दी, ठीक है. y एक्सिस पे you actually plotted the number of plants per square meter. वहां से आपने डेटा उठाया और आपने बार चार्ट बना दिया. आपकी मर्जी है, इसमें तो कलर से शो किया हुआ है, बट ऑफ कोर्स आप कलर तो नहीं करोगे एग्जाम में. यू कैन जस्ट शो अ लेजेंड. डू यू ऑल नो व्हाट अ लेजेंड इज? इसको लेजेंड कहते हैं. क्या मतलब है लेजेंड का? हाँ जी, दुआ आप बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय लेजेंड? मिस मे बी की. हाँ, लेजेंड मीन्स की. हर मैप पे जो जब भी आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो हर मैप पे एक लेजेंड बना होता है, राइट? सो लेजेंड इज द की. तो इफ यू आर आस्क्ड टू मेक अ बार चार्ट लाइक दिस, यू कैन ऑलवेज मेक अ लेजेंड कि भाई दिस बार व्हिच यू हैव ड्रॉन बिलोंग्स टू दिस स्पीशीज एंड सो ऑन. ठीक है. कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ आ रही है? मरियम, दुआ, राफे? All good, miss. ऑल गुड. अगर ऑल गुड है तो इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव फिनिश्ड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड रैंडम सैम्पलिंग. ठीक है. एंड नाउ वी मूव ऑन टू, अब आएगा हमारे जो असल जो है ना, जिस तरह से हमने काई स्क्वायर किया था ना, सिमिलरली वी हैव, इनफैक्ट आप लिस्ट डाउन कर सकते हो कि अब तक मैंने आपको कितने स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला दिए हैं. सो अप टिल नाउ आई हैव डन काई स्क्वायर विद यू, एंड नाउ आई मूव ऑन टू सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, व्हिच इज अ वे of calculating the diversity of an area. याद है लास्ट टाइम हमने कितनी डिस्कशन की थी कि अमेज़न ये जो जंगल है, इट्स मोर बायोडाइवर्स. कोरल रीफ्स जो हैं
वो उनकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, मेडागास्कर की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है अगर मैं कंपेयर करूं कराची की बायोडाइवर्सिटी से. सो वी कांट से कि द बायोडाइवर्सिटी इज मोर और लेस. We have to give a certain magnitude to the biodiversity, because if I am an ecologist and I am doing an ecological survey of the entire hemisphere, pura, yeah, of the entire globe, I have to have a proper, accurate mathematical construct in order for me to get an idea about which area is under threat. यानी कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं अमेज़न में या मेडागास्कर में, तो मैं उसको मैथमेटिकली किस तरह से मतलब प्रूव करूंगी. मैं ऐसी जनरल बात तो नहीं कर सकती ना, नॉन स्पेसिफिक. आई हैव टू हैव अ फॉर्मूला, और उस फॉर्मूला के हिसाब से मैं कैलकुलेशन से कोई इंडेक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी निकालूं, and then I keep on checking the index of biodiversity at regular intervals to have an idea कि इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हुई है या नहीं हुई है, राइट? So to do that, what do you do? We have a formula which is known as the Simpson's index of biodiversity. And what we do is that when we have collected information about the abundance of species in the area, अभी तक हम abundance of species की information collect कर रहे थे through random sampling, systematic sampling and Lincoln's index. When we have done that, अगर हमारे पास ये सारा डेटा है तो हम आराम से Simpson's index of biodiversity निकाल सकते हैं. Just like we had the symbol of this as chi-square, we have the symbol of capital D. Capital D अगर आपको जब भी capital D नजर आए, इसका मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? Simpson's index of diversity. So the formula is capital D is equal to 1 minus bracket open sigma. Again, there is a bracket small n upon capital N square and bracket closed. So good thing about paper 4 is that you are not supposed to remember these formulae. You will be given data, but you should know what does small n, capital N and capital D stand for. आपको ये पता होना चाहिए, right? Small n और capital N में confusion हर student करता है हर साल. So please don't do that confusion. You should know the difference between small n and capital N. राफिया, आप मुझे बताओ small n और capital N में what's the difference? Miss, small n is only talking about like one specific species, while capital N talks about every species, like total species. Exactly. Okay. And values of D, they range from 0 to 1. Whenever you are given a question in which you are supposed to solve or find out the index of biodiversity, तो आपका एक ना वो होना चाहिए, एक benchmark होना चाहिए, and that benchmark is that your answer should be between 0 to 1. If your answer is not between 0 to 1, इसका मतलब आपकी calculation wrong है, right? A value which is near 0 represents a very low species diversity. A value which is near 1 represents a high species diversity. So now I will be giving you some data, ठीक है? और उस data से आप अपना calculator अपने साथ रखो. I'll be waiting ताकि आप जल्दी जल्दी से calculation करके और मुझे बताओ, right? Let me just give you some guidelines and then you can start doing it. Worked example 2. A sample was made of the animals living on 2 rocky seashores. राफे मुझे बताओ, rocky seashore uniform area, non-uniform area? Non-uniform. ठीक. 10 quadrats were placed on each shore, 10. And the number of the animals of each species in each quadrat was counted. The results are shown in the table below. So you have shore A and shore B. ये दोनों अलग-अलग shores हैं, ठीक है? और दोनों shores पे, यानी shore A पे भी हमने 10 quadrats use किए, and on shore B also we used 10 quadrats, and within those 10 quadrats we counted the individual numbers of the different kind of species that you can see over here. ये सारे वो different kinds of species हैं जो हमें seashore पे नजर आए. What are you supposed to do? You are supposed to determine the Simpson's index for shore A, calculate small n upon capital N for each species, square each value, add them up and subtract from 1. ठीक? Repeat the procedure for shore B. अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं आपको इसका फॉर्मूला लिख के दे देती हूँ. D is equal to 1 minus D is equal to 1 minus
bracket open, sigma. ठीक है, this is your formula, sorry, small n upon capital N, right? This is your formula and you are supposed to calculate the Simpson's index for shore A. अच्छा, अब आप मुझे बताओ, इसके लिए you will have to make a table जिसमें you will be individually calculating small n upon capital N for each species. कैसे करेंगे हम, कौन बताएगा मुझे ये? What is capital N for shore A? Question में दिया हुआ है capital N 1107. 1107 दिया हुआ है. अच्छा, तो अगर मुझे painted top shells का निकालना है small n upon capital N, what will I do? 24 upon 1107. ठीक है. So you will have to do it for each of these. Please जरा फटाफट करके मुझे बताओ कि क्या आंसर आ रहा है. When you're done with the calculation, please do let me know. Right now, only do it for shore A. No need to do it for shore B.
फर्स्ट वाले का क्या आ रहा है मरियम, आप बताओ. 24 divided by 1107. What's the answer? You tell me, I'll write it down. 0.0217. 0.0217. एक second. अच्छा, 0.0217. अच्छा, सेकेंड वाले का 0.332. दुआ आप बताओ थर्ड वाले का क्या आ रहा है. 192 वाले का 1734. 0.173. बस 3 डेसिमल प्लेसेस बहुत हैं. 14. नेक्स्ट. 0.013. एंड नेक्स्ट. 0.075. नेक्स्ट. 0.101. 101. 0.187. 0.187. 0.098. ठीक है. Once we've got this, so this means that we've got what? We got small n upon capital N for each species, right? Then we square all the values. Squaring कर ली सबने? Did you square all these values? Just ignore sure B at the moment. एक हम for example हम एक column बना लेते हैं. This, in fact, we can, you know, in order to do this question, we should make a new table जिसमें क्या होना चाहिए. एक तो ये होना चाहिए show A वाला data. Then there should be another column in which there should be this data which is अभी जो हमने निकाला small n upon capital N, and then there should be another column. इसके लिए new table बनी चाहिए. ऐसे आप एग्जाम में करोगे small n upon capital N square, and then we will be squaring all these numbers जो आप लोगों ने मुझे बताए हैं, and then we will be noting that down. ठीक है, तो आप लोगों ने square कर लिया है या कर रहे हो? मैं कर रही हूँ. अच्छा, कर लिया है. अच्छा, चलो क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम है तो मैं आपको I'll just show you these answers. So our answers of course are more or less the same. सिर्फ एक first वाले का difference है because उन्होंने उनको शायद round off कर दिया है. ठीक है, otherwise you can see that your answers are the same as these marking scheme. And then after squaring, अभी थोड़ा squaring के step को jump कर लेते हैं because all of you know how to square it, and then after squaring this is what we get, right? These are all the answers for n upon small n upon capital N square, and these are the answers. फिर हमें क्या करना है इसके बाद? मरियम आप बताओ, when you have squared all these numbers, what are we supposed to do? मिस इनको ऐड करके 1 से माइनस करना. बिल्कुल, इनको हमने ऐड किया. sigma means add, so when we add up all these numbers, the sum of these numbers is 0.201, and then we will subtract it from 1. ठीक है. अच्छा, then we get an answer which is 0.799. Rafi, now you tell me, is this number close to 1? No. In a way, हाँ, मतलब ऐसे for example 0.7 जो है वो 1 से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, right? But I won't say it's very close to 1, but it's not also far away from 1. So yes, I can say that the biodiversity is not that bad. It's 0.799, but the question tells you that you are supposed to find out the biodiversity for shore A, and then you will repeat the same procedure for shore B, and then you will try to compare the biodiversity. तो अभी वही, there's a shortage of time, so I'll just show you कि इन्होंने किया कैसे है. Whatever you did for shore A right now, जो सब हमने अभी किया है, they did it for shore B. Same उन्होंने वही किया कि shore B के लिए they jotted down small n, they found out small n upon capital N, then they squared the numbers, they added the numbers, and they subtracted the sum of all the numbers from 1. So they found out that the Simpson's index of biodiversity for shore B was 0.733. ठीक है. Now I hope all of you can see my screen. तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि what do you, or what idea, or what will be your final conclusion or your analysis as far as the results of the Simpson's index of diversity for both shores are concerned. तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि shore A has a high index of around 0.8, क्योंकि उन्होंने 0.799 को 0.8 करके round off कर दिया है, and shore A
has an index of 0.7. This means that shore A has a higher biodiversity than shore B. The absence of snake-lox animals and the small number of beadlet animals on the shore B is not compensated for by the larger number of barnacles. There are many more limpets, dogwells, mussels, and periwinkles on shore A, which contribute to the high value of the index. For this, we will have to go back to the original table. This original table actually gives us an idea that the reason why the biodiversity of shore A is more than the biodiversity of shore B is कि आप खुद देख लो कि कुछ ऐसी species हैं which you don't find in shore B at all. नजर आ रहा है कौन सी है वो species जो आपके पास shore B में है ही नहीं? What is that? Snake-lox. Snake-lox. So you don't find snake-lox on shore B. That is why you will say कि that's the reason why that the biodiversity is very less, right? So up till now we have finished. We began with sampling. We did random sampling last time and Lincoln's index. Today we did systematic sampling. ठीक है? And systematic sampling में we did the line transect and the interrupted belt transect. We studied how we will be, using the interrupted belt transect, and we can use that data to plot it on a bar chart. And then we did Simpson's index of diversity. ठीक है? और हम किस तरह से दो areas की diversity को compare कर सकते हैं, right? We can do the comparison. And like, for example, this is another question which has been given in your textbook so that you guys can get an opportunity to practice calculation of biodiversity. ठीक है? अच्छा, और इस तरह से आपको ये data दिया जाएगा and you will be told to find out the Simpson's index of diversity. अच्छा, एक मैं पूरा नहीं करवाऊंगी आपसे, मैं एक दो सवाल पूछूंगी इसमें. दुआ आप मुझे बताओ, what will be capital N as far as this data is concerned? What will be capital N for this data? Yes, we will add the total number, मतलब 56 plus 48 plus 12 plus 6 plus 3 को add कर देंगे तो आ जाएगा. बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा. ठीक है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे किया. ये देखो, they added 56, 48, 12, 6 and 3. They got capital N, which is 125. So I think the only mistake that the students will do as far as this question is concerned is कि वो small n और capital N में गड़बड़ कर देंगे. Otherwise इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, right? अच्छा, Yes, एक और क्वेश्चन, हाँ, एक और क्वेश्चन है जो मैं चाहूंगी कि मैं आपको वो करवाऊं, मतलब इसी के पार्ट में, कैलकुलेशन वाला नहीं. इसमें लिखा है कि पार्ट सी है ना मेरे ख्याल से. हाँ, explain the advantage of using, मैं पार्ट बी को पढ़ रही हूँ. Explain the advantage of using data on species diversity and abundance when calculating an index of diversity. So what they are saying is कि क्या advantage है when we are using the data of species diversity while calculating biodiversity. It says an ecosystem that has one dominant species that is very abundant may have a large number of species, but there would be very few individuals of other species. If abundance is measured only, then there may be many individuals of this dominant species, but there may not be many other species, so it is species poor. An area with one dominant species, which is very abundant, has a lower biodiversity than an area with no dominant species and many species of all roughly the same abundance. What do you mean by this? Rafe, इसका क्या मतलब है? आप बताओ. I don't know. No, read this and tell me. Okay, let me go back to the question. The question was saying, explain the advantage of using data on species diversity, ठीक है, and abundance when calculating an index of diversity. Last time when we were doing sampling, we were finding out abundance also and species diversity also, right?
सही है, तो वो आपको ये कह रहे हैं कि what is the advantage of using data on species diversity and abundance when calculating an index of diversity. Now for that they have given this reason. Read this reason, Rafe, and all of you, the rest who are in the class right now, and tell me what sense is this making to you. मिस इसमें बता रहे हैं कि the number of individual species doesn't affect the index, but the number of all the species affects it. Like if there's lesser species but more like number of individual species, like तो उससे number गिरेगा, ऐसा है. What they are trying to say is, this is what they are trying to say, कि when we were given this data in the very beginning, if let's say the number, for example, shore bee की biodiversity कम आई थी, right? But the reason why the biodiversity of shore bee was less was that it did not have equal number of all different kinds of species. Just because of the fact that it has one large number of a dominant species in an area does not make it a highly biodiverse area. This is what they are trying to say. If I want to say that there are two areas A and B, and if I say that area A has a high biodiversity as compared to area B, what this means is that area A has different numbers of species which are equally distributed within that area. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक स्पीशी का नंबर डोमिनेट कर रहा है दूसरी स्पीशी पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट द एरिया हैज अ हाई बायोडाइवर्सिटी. हाई बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है कि विद इन अ पर्टिकुलर एरिया, लेट्स से अगर वहां पे 10 डिफरेंट स्पीशीज हैं तो 10 के all the numbers of the different species should be equally distributed, right? This is what makes an area biodiverse. Next time we will have like a more detailed discussion about it, but I think it's enough for today. The recording was going on, so those who are not here online can listen to it. Acha guys, before I end up, I would like to, I think you have your test on Monday, bio test. Monday को है? अच्छा, तो मैंने एक क्वेश्चन शेयर किया है कल, अगर आप लोगों को पता नहीं किसी ने देखा है नहीं देखा है, please do that question because I've deliberately shared it so that you don't have any problem in your test. Because the cross that I have shared, same kind of crosses will be asked in the test. So please take it seriously, ठीक है, so that you perform much better in the test. Allah Hafiz everybody. Allah Hafiz, miss. Allah Allah Hafiz. Hafiz. Allah Hafiz.